remember, more than anything, right now, what we're doing is we're teaching people how to have financial independence in their life. So I want to start this off by giving a big shout out to Viraj for all the success that they've been having out in India, because man, this guy's an absolute beast when it comes to work ethic, when it comes to working day in day out. He's putting in 20+ hour days, and he is the epitome of leadership in my book. So thank you so much, Viraj, for everything that you're doing. I'm going to go ahead and hand over the time to you, and so you can teach the people how it is that you and the team out in India are duplicating and teaching IX, so people around the world can hear this message and they can start to understand the opportunity that we have in front of us. So with that, Viraj, I'll go ahead and turn the time over to you. Thank you so much. Thank you, thank you. Joe, I just want a single favor from you. You only keep sharing the screen because Yes. there is a voice break, and anyways, I'm going to do the training in 2 languages. So you can just like ऑलराइट दोस्तों, सो हम ट्रेनिंग का कमेंसमेंट करेंगे। सभी लोग को बधाइयाँ। ये मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, बिल्कुल मुझे अकेले के लिए नहीं है, ये पूरे के पूरे टीम का कॉन्ग्रेचुलेशन है। तो आज आपको ट्रेनिंग जो है सिस्टम को, जो मैं मेरे मेंटोर से सीख पाया और जो भी मेरे इतने समय से मेंटोर है, वो सारा एक इसमें देने वाला हूँ। डेफिनेटली हो सकता है ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं हो, लेकिन इंटरेस्टिंग चीजें कभी पैसा नहीं देती। तो लास्ट तक बने रहिएगा इस ट्रेनिंग पे, ताकि जो है आप इसमें मैक्सिमम वैल्यू ले पाए और डेली बेसिस पे क्या चीजें करनी है। हमेशा हम सब लोग जानते हैं कि हमको डिसिप्लिन में रहने से ही सक्सेस मिलता है। डिसिप्लिन के बिना कोई भी सक्सेसफुल लाइफ में होता ही नहीं है। तो क्या चीज है वो, क्या डिसिप्लिन है, क्या अकाउंटेबिलिटी है, क्या सारी चीजें करनी है हमको डेली बेसिस पे, वो इस ट्रेनिंग में पूरा हम लेने वाले। तो ट्रेनिंग को कमेंस करेंगे। To translate that, so basically we are gonna take a training today on the daily to-dos or the daily method of operations, the daily disciplines which we have to do in the business. So it is no secret that to have success in any phase of life, in any field, we need to inculcate the disciplines of that particular field. And so what are the daily methods or what are the daily disciplines which we need to do on a daily basis? That is what we are going to cover in the entire session. It is going to be a bit long, so I would request each and everyone to bear with me, and believe me, it won't be as interesting as a movie, but things which are interesting, they do not pay out, and this might be boring, but this will definitely pay you out. And with the same system, more than 120 people have already impacted their life, making over $500 to $1,000 every single month. So be tuned till the end so that you can take entire value from the session. So we can go for the next slide. ऑल राइट, सो दोस्तों, ये बेसिकली हमारा IX लाइफ है। IX लाइफ यानी हमारे 8 स्टेप्स, हमारे 8 बिजनेस स्टेप्स जो हमारे बिजनेस को ग्रो करेगा। तो हर चीज में स्टेप होता है। जैसे हमारा दिन का एक रूटीन होता है, दिन के रूटीन के हिसाब से हम चलते हैं, उस हिसाब से हम एज ए इंसान मान के चलो, हम मोटे हैं, पतले हैं, गोरे हैं, जैसा भी है वैसे दिखते हैं, या जो भी लाइफ में वैसे रहता है। तो वैसे ही हमारे बिजनेस में भी एक तरह के 8 स्टेप्स है जो हमको डेली बेसिस पे करने, जिसको हम देखेंगे, समझेंगे, और समझने का बाद अगर अप्लाई करेंगे तो ही कुछ फायदा होगा, नहीं तो कोई मतलब है ही नहीं। So basically we are gonna have a training of 8 steps to creating a success of business in IX. As we all know, we all have a routine in our life which makes us what we are today. Maybe if we are fat, we are thin, we are whatever we are, however we are. So in that sort, we also have a certain set of routine in our IX business which can take you from where you are to where you want to be, provided you listen to this entire training, make some notes, and definitely if you apply them in real time. So आगे बढ़ते हैं दोस्तों, we'll go to the next slide. So steps है क्या सक्सेस के लिए? So we can just click on the next slide. तो पहले बात तो दोस्तों, हम प्लान करते कोई भी चीज के लिए। प्लानिंग का मैं थोड़ा सा महत्व समझाना चाहूंगा। मैं शुरू करना चाहूंगा ड्रीम से। गेस व्हाट, बोर मत होइए, मैं ड्रीम के बारे में बिल्कुल बात नहीं करने वाला। ये वो सेशन है ही नहीं, क्योंकि आप बोलोगे ड्रीम वो क्या होता है, वो तो बचपन में देखा था, उसके बाद तो सारे हमारे खो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में जब भी हम जाते हैं दोस्तों, तो
हमारा स्कूल में जाने का जिस हिसाब से चलन कलन रहता है, हम लाइफ में क्या बनना चाहते हैं हमको तो नहीं पता होता है, लेकिन हमारे पेरेंट्स हम में एक सपना देखते हैं, वो देख करके हमको स्कूल में डाला होता है। तो स्कूल में डालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हमको पढ़ाई करना होता है। पढ़ाई करने के बाद क्या होता है, हमारे अच्छे मार्क आते हैं। अच्छे मार्क आने के बाद हम हायर स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं। उसके बाद जॉब लेते हैं, और वो जॉब के लिए जितना सैलरी मिलने वाला रहता है उस हिसाब से डे वन से जूनियर केजी से हमारे मॉम डैड हमारे में ड्रीम देखते हैं। उसी हिसाब से उन्होंने छोटे छोटे गोल्स को उसको ब्रेक डाउन करते हैं। उस हिसाब से प्लानिंग से करिकुलम होता है हमारे स्कूल्स में भी, हमारे क्लासेस में भी। और हमको बिलीफ होता है, हमारे पेरेंट्स को भी बिलीफ होता है कि वो वैसे वर्क करेगा। और उस हिसाब से हम जो लास्ट स्टेप है, एक्शन एक्शन करते हैं, जो कि यू कैन जस्ट क्लिक वंस, एक्शन करते हैं हम लोग। उसके हिसाब से हम जो भी है प्रोफेशनली बनते हैं, चाहे जॉब लगे नहीं लगे, लेकिन वो हमारा नॉर्मल प्रोसेस है जिसके हिसाब से हम डेली बेसिस पे सुबह उठ के स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी जॉब के बाद भी जो भी करते हैं अपने प्रेजेंट रिस्पेक्टिव लाइफ में। पैटर्न तो यही होता है। तो इसी के ऊपर आगे डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम मैं ये ट्रांसलेट कर लेता हूँ। सो द फर्स्ट स्टेप इज प्लान फॉर द डे। व्हेन वी बिफोर वी टॉक अबाउट प्लानिंग फॉर द डे, let us talk about these five things which are written on the slide. Of course, I'm not going to talk about dreams, because you must be feeling like, oh, what is a dream? This I heard in my last company, but it never got fulfilled, or whatever. I'm being hearing this since my childhood, but after that I just got lost. I just saw dreams when I was sleeping, whatever. So basically, the process of our life. When we are a kid, we are put into the school by our parents. They see a dream in us. They want us to be whatever, like making x amount of money in our job. That's how like they condition ourselves, make us study in a primary school, maybe in a secondary school, professional degree, and then we get a job and make that so called income. So they have the dream first, then they set goals for us. What is the first goal? First goal is like getting an admission in the school. What is the pattern of a traditional society which is being imposed on us? Then they plan it, they give us or put us to some classes, learning, coaching center, and they have the belief that if you go through the process and if you act, then you might get the end result. Of course, there are many people who get way above the end result, some people who don't get any results. So it is again all about the action. So which is very important for us to understand the first step, which is plan for the day. तो जब हम बात करते हैं दोस्तों प्लान फॉर द डे, इसको मैं समझाने के लिए इतना थियरी दे रहा था। प्लान फॉर द डे है क्या दोस्तों? उसमें ड्रीम हम, चलो जॉब में जो भी कर लिया, हमको इतना अच्छा पैसा आ गया, किसी को अच्छा पैसा नहीं आया, हर किसी का, लेकिन कुछ ना कुछ कमी तो लाइफ में है ही ना। खासकर इस पैंडेमिक सिचुएशन के बाद तो बिल्कुल है। आप ये चीज से डिसएग्री कर ही नहीं सकते कि हमारे लाइफ में कमी नहीं है या फिर हमारी लाइफ बेहतर नहीं हो सकती। तो ड्रीम छोड़ दीजिए, मैं तो आपको कहता हूं आपका फियर क्या है, क्या चीज है जिसके लिए आप काम कर रहे हो इस अपॉर्चुनिटी में, या क्या चीज है, आपका क्या पर्पस है जिसके लिए आप इस कॉल के ऊपर आए हो। कुछ भी हो सकता है पर्पस, डिपेंड करेगा। जैसे अगर आप जॉब पे जाते हो, जैसे आप जॉब की बात कर रहे थे, जॉब पे कोई मोटिवेट होके सुबह नहीं उठता जस्ट बिकॉज वो अपने बॉस से, उसकी फियर होती है बॉस की कि बॉस डांटेगा या फिर इंक्रीमेंट नहीं देगा या फिर उसका सैलरी कट होगा, इसीलिए वो डर के उठ के जाता है। उसके लिए उसने गोल बनाया होता है कि मेरे को इतना इतना सैलरी आना चाहिए, इतना इतना सैलरी अगर नहीं आएगा तो मेरे घर पे रोटी नहीं आएगी, मेरे बच्चे जो है मुझसे उम्मीद लगा बैठे, मेरी फैमिली मुझ पे आस लगाए बैठी है। वो देख करके वो मोटिवेटेड हो, उसकी ना हो, उसकी नींद पूरी हुई हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ठंडी हो, कोई भी सीजन हो, बंदा जो है वो ऑफिस जाता है, क्योंकि वो एक चीज उसका पेन पॉइंट है लाइफ का। तो वैसा पेन पॉइंट आपका क्या है लाइफ में, ये मैं आप लोगों से अपने आप को क्वेश्चन पूछने के लिए कह रहा हूं कि आप अपने आप से पूछो, आप इस चीज के लिए क्यों आए हो और वो क्या चीज है जो आपको सताती है। जैसे जॉब में जाने से पहले आपको जो है वो पता है अगर नहीं जाओगे तो सैलरी कट भी हो सकती है, इंक्रीमेंट नहीं मिल सकती है, तो वो चीज आपको पुल करता है। तो वैसे आपका पुल करने वाला फैक्टर या रोने वाला फैक्टर, पेन पॉइंट क्या है, वो आप डिटरमाइन कर लीजिए। वो होगा आपका पहला स्टेप। उस हिसाब से हम पहला गोल, देखो गोल हर किसी के बड़े होते हैं,
गोल हर किसी के बड़े होते हैं, उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। लेकिन अगर आपको 10 लाख बनाना है तो डे वन से 10 लाख नहीं आता। 10 लाख से पहले 1 लाख आता है, 1 लाख से पहले 50,000 आता है, उससे पहले 35,000 आता है। तो मान के चलो अगर आपका गोल 35,000 है तो वो 35,000 आपको क्यों चाहिए, नहीं मिलेगा तो क्या चीज आप खोने वाले हो, वो सोचो। घटिया से घटिया चीज जो आज तक लाइफ में हुई है, और जो शिट जो इतने सालों से आप जिसके थ्रू जा रहे हो, वो सारा चीज आप याद रखो। उस हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप में आएगा, जो हम वापस भी कवर करेंगे क्या करना है इसमें। और बिलीफ लेकर आओ, अपने आप में बिलीफ लेकर आओ। जब आपको ये रीजन पता चला है, अगर कोई माइंड नहीं करता तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक लिख सकते हो आपका रीजन क्या है, क्या चीज आपको किल करते आप इसमें क्यों आए हो। तो प्लान करके पहले बात तो अपने आप में बिलीफ लाओ कि अगर 130 लोग यही स्टेप से ये चीज कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड एक्शन लो तो। So what I was explaining is about the natural process why we need to plan our day, because let's say when we were understanding the process about how why we were put into the school and what uh, was the vision put by our parents, they what dream they were seeing in us. So in a similar way, what is the lack in your life, or what are you missing out in your life at this standpoint, so that you turned your face towards IX, or you came on this call, or you joined this opportunity. I am not talking about dreams, I am not talking about the big goals. What is the thing that hurts you most? For example, if you're going for a job, uh, you don't need motivation to go for a job. In fact, even if you're not well, even if you don't feel like going, even if you're having like severe rain, cold, heat, whatever, you show up to the job just because of the fear motivation, that if you don't show up, the boss will be angry, you won't get the so-called promotion, or maybe you will have a salary cut which will stop that so-called paycheck in your house, and due to which the bread and butter will be affected, or the food won't be on the table, and your family is having a lot of hope on you. That is the pain point, which is kind of a fear motivation for you to go or to show up consistently every single day, which is your initial goal to start off. And that's why you plan, you believe, and you act. So basically, what is your reason? I want to ask this question to you. Maybe you can type this in the comment box if you feel that like we have to keep it interactive, or if you just find this at a boring lecture, maybe you can just listen and sit back. So if you'll type like what is that you came in for, maybe it might be $500, $1,000, $10,000, $100,000, whatever. So goals, everybody has big goals. I'm not talking about the ultimate goal, but what is your initial pain point? And if you don't get that income, what what is the pull? Just like the pull is, if you don't go, you will have a salary cut. What is the pull? What is that pushes you? What is the fear if you don't do that? So you need to know that. You, if you don't know that, of course, like everybody must be, someone must be having $10,000 a month goal, some must be having like $100,000 a month goal, but you don't directly achieve like 100,000. First you achieve 10,000, before that you achieve 1,000, before that you achieve 100. So what is your initial goal? And if you don't get that, what are you going to lose? Who's going to cry at your home? Who has put your hope on you? So that will be your first initial goal. And for that, we need to plan our day, and we need to put the belief that if 130 plus people are able to achieve through this opportunity, we also can achieve, provided we act daily. So for that, we need to plan our day just as we plan our daily routine for a job. Of course, that is the control for that paycheck is in someone else's hand. This control is in your own hand. So you ought to do it. So basically, we'll talk about what to do in the entire day in the later phase of the training. We can go to the next slide. So second part, जब हम बात करते हैं दोस्तों, लिसन टू एन ऑडियो। लिसन टू एन ऑडियो हमारा सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप ये क्यों है? हम कोई भी जंग पे जाते हैं, कोई भी बैटल पे जाते हैं, हम पहले एक्शन से नहीं, पहले माइंड से जीतते हैं दोस्तों। कभी भी पहले जीत माइंड से होती है। अगर हारा हुआ दिमाग लेकर के जाओगे ना, आप कितने भी बलशाली हो, हार के ही आओगे। तो माइंडसेट कैसा है, आप अपना दिन कैसा शुरू करते हो, उस हिसाब से आपका जो है पूरा का पूरा आगे का दिन का प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी रहेगा। सुबह सुबह क्या चीज से आप दिन चालू कर रहे हो, वो आपने सुना ही होगा, आपका पेचेक एवरेज है 5 लोग जिनसे आप सराउंडेड हो। तो वो पेचेक एवरेज करने के लिए उन लोगों से क्या आप सुबह सुबह सराउंडेड हो? क्या आप सुबह सुबह वैसे डायरेक्शन अपने दिमाग को दे रहे हो?
अगर नहीं दे रहे हो, मैं इसमें आपको नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स देखने बोल ही नहीं रहा, लेकिन वाई के ऊपर ट्रेनिंग देखो सुबह सुबह, जब आप सुबह रेडी हो रहे हो, से सुबह काम शुरू करने से पहले चाहे ऑडियो बुक सुन लो, स्पीकर लगा लो, ईयरफोन लगा लो, ब्रश करते करते से लेकर के नाश्ता करने तक एटलीस्ट आधा घंटा भी अगर आप देते हो ना दोस्तों, दिमाग से अगर आप जीत गए ना, बाकी जीत तो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रादर देन व्हाट्सएप खोल के या न्यूज़पेपर खोल के सारा नेगेटिविटी से डे स्टार्ट करने से। उससे आप दिमाग से ही पहले हार जाते हो, दिन ही थका हुआ निकल जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे दंगे हो रहे हैं, यहाँ पे वो हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने ये कर दिया वो कर दिया। तो ये स्टेप बहुत जरूरी है। कुछ लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन आपका माइंडसेट जितना पावरफुल है उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। So what I was telling about the second step is like listen to an audio. It is a fact, and most of the people agree with this, that we always win in our mind first, then later with our action. So to win in our mind, we should like inculcate our mind with like mind nutrition, which is like positivity. It is an old saying that your paycheck is an average of 5 people you're surrounded by. So how you're starting your day before work? Like, are you just reading a newspaper with all the negative news, with the WhatsApp, with the Facebooks, or whatever, or you're starting it on a positive note? We have the entire mindset section in the IX, which is specially made for you to win in the mind first and start your day on a positive note. I'm telling you, I'm challenging you that just give 30 minutes of your life, right from your uh, time when you're brushing till the time you get ready before you show up to your work. So when your day starts with such a positivity, with that mindset, no matter what, nothing can stop you from like having the winner's mindset. And when you have a winner's mindset, definitely there is no leaps and bounds to grow in this business. So we can go to the step number 3. तो स्टेप नंबर 3 क्या है दोस्तों, जो हमको करना है? प्रोडक्ट रिजल्ट्स, इमोशनल कनेक्ट, रेविंग फैंस। क्या लिखा है मैंने इसके ऊपर? सो बेसिकली दोस्तों, अगर प्रोडक्ट के साथ आपका इमोशनल कनेक्ट है ही नहीं, आप उसके फैन या एडिक्ट हो ही नहीं, तो मतलब ही नहीं है बिजनेस का। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? कुछ लोग प्रमोट करते, आते ही प्रमोट करते, पता ही नहीं क्या प्रमोट कर रहे, मतलब क्या ऐसे सब चीजों का। मैं आपको पहले ही इमोशनल कनेक्ट बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। हम क्या सेल करते हैं, हम कौन सी सर्विस सेल करते हैं? हमारे एजुकेशन, जैसे आप सोचो, स्टोर कभी भी फैक्ट सेल नहीं करते, स्टोरीज सेल करते हैं। तो आपका जो एजुकेशन, जैसे अभी संडे जो हमारा सेशन हुआ, न्यूज आउटलुक हुआ चाइना के ऊपर, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, कितना बेहतरीन एजुकेशन था, वो स्टोरी कनेक्ट नहीं हुआ आपको? आपको पूरा का पूरा एजुकेशन का इंपॉर्टेंस पता चला। अलर्ट अलर्ट लगाने से, मैंने बेसिक चैनल का नास 100 का अलर्ट लगा लिया, 900 पिप दे दिया, हफ्ते का सैलरी एक अलर्ट में आ गया। सारे के सारे ऑटोमेशन, मैं पूरे 3 हफ्ते से काम कर रहा हूँ, सैलरी डिले है, 3 महीने से कर रहा हूँ ये चीज, डिले पे डिले सैलरी, लेकिन एक ऐसा टूल मिला है जिससे पैसे से पैसा मेरा बढ़ रहा है। दोस्तों, ये सारी चीज होने के लिए हमको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। 100% प्रोडक्ट यूजर का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एक एक अलर्ट लगाओ, एक एक अलर्ट लगाओगे तो डेफिनेटली ओवर लेवरेज करके ब्लो आउट हो जाओगे। मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट में घुस जाओ, सीखो, जानो उसको, कहीं ना कहीं आप इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे, आपकी खुद की एक स्टोरी होगी, गुड मॉर्निंग विश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुड मॉर्निंग वैसी हो जाओगे। और इतने अप्स एंड डाउन हमने फॉरेक्स में देखे, फिर भी अगर हम इस इंडस्ट्री या इस प्रोडक्ट स्पेस में बने ना, तो प्रोडक्ट सेक्टर में दम है, क्योंकि हम भी उसके रेविंग फैन है और हम भी ऑब्सेस्ड है कि इसमें पैसा और ये देगा ही। तो 100% प्रोडक्ट यूज हमको करना है, और प्रोडक्ट रिजल्ट्स को हमको व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक स्टोरीज, और मेजरली हमारे आईएक्स ऐप के थर्ड स्टेप आईएक्स लाइफ के सेक्शन में, उसमें शेयर करना है, ताकि आपकी स्टोरी, आपकी इमोशनल कनेक्ट दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए प्रोडक्ट के साथ, जिस सर्विस को आप यूज कर रहे हो। सो व्हाट आई वाज सेइंग अबाउट स्टेप नंबर 3, प्रोडक्ट रिजल्ट्स, इमोशनल कनेक्ट एंड रेविंग फैंस. Of course, like, you can't have emotional connect or be a raving fan of the product unless and until you connect with the product properly, or you are using the product 100%. So basically, there are some people who just come in the business and just start promoting without knowing what service we are using or promoting. So basically, you need to, we all know, we all agree with this fact that uh, facts don't sell, stories sell. So we need to have our own story. Let's say we had a session this Sunday on the news outlook about the circumstances which is imposed by China on India, and how that circumstances are
affecting the entire currency market. So I like that story. Like I have a story about that. So I am a fan or a addict of that education. I just love the education. We are not just about alerts. Or let's say I can have a story like wherein I just put a NAS 100 alert from basic channel. It gave away 900 pips, which a basic user cannot understand what is 900 pips. But I made my weekly wage on that one single alert. So basically, I'm working for 3 weeks and I'm not getting paid for that, or maybe my salary is delayed. So whatever emotional connect you're having with the product, for that you need to be on the product and like 100% use the product. Let's say for example, automation. What is automation? Like when you're working and you're not getting anything, still we have a tool wherein your money is working by itself. So basically, if you don't have 100% product use, we're not just about alerts, we're not just about automation, we are about education. So somewhere when you use the product 100%, you will have that emotional connect, and having that is very important for having belief in the service which we are selling. And believe me, I've seen a lot of upsides and the downsides of the forex industry, maybe the horrible ones as well. Still, if I'm in this industry, that means the product space has a lot of impact or lot of value in it. That's why we are still there, and I'm obsessed and I'm a big fan of this space. So we need to share this product results, maybe on the stories, maybe on the ix app with our own personal stories. Or it is very important to have a emotional connect with the product, which is the step number 3, and which will pique interest of other people as well as yourself about the value we are providing through ix. Step number 4, हमारा स्टेप नंबर 4 दोस्तों क्या है? थोड़ा स्टेप नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, जो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. तो स्टेप नंबर 4 में शेयरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन को दो चीजों में हमने डिवाइड करा. शेयरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों, आईएक्स क्या है? आईएक्स इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. तो आईएक्स का अगर विजन के साथ आप अलाइन करते हो, जिसमें आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना है हर किसी के लाइफ में, तो आपको इसको शेयर तो करना पड़ेगा ना. तो शेयर करने के लिए आपको पता होना चाहिए आप किसके साथ ये चीज शेयर करने वाले हो, आपका टारगेट मार्केट क्या है, आपके फ्रेंड्स फैमिली, आपकी हॉट लिस्ट है, कोल्ड लिस्ट है, वार्म लिस्ट है, आपका नेशनल लिस्ट है, इंटरनेशनल लिस्ट है, क्या है आपका, वो आपको पता होना चाहिए. जैसे आप अगर होटल या आउटलेट खोल देते हो, ऐसे दिमाग में लिस्ट नहीं होती, पूरा का पूरा रॉ मटेरियल आप डायराइज करते हो. और कहीं ना कहीं अगर आप इसको एक सिर्फ प्लान बी या सो कॉल्ड एंकी पैंकी प्रोजेक्ट नहीं मानते, एक प्रोफेशन मानते हो, तो कहीं ना कहीं आपको इसको एज अ प्रोफेशन ट्रीट करना पड़ेगा. और ये चीजें सीरियसली अगर करते हो ना, बिलीव मी, काफी कुछ चीजें बदलेगा. लिस्ट पेपर पे बना, ऑफ कोर्स लिस्ट बिल्डिंग के डिटेल में मैं नहीं जाने वाला. उसका सारा ट्रेनिंग जो है हमारे आईएक्स ऐप में पड़ा हुआ है, उसी के लिए हमने ऐप और एकेडमी बनाया. तो लिस्ट बिल्डिंग में डिटेल में बात नहीं करने वाला हूँ, लेकिन लिस्ट एज कॉम्प्रिहेंसिव एज पॉसिबल बनानी है. 5 नए लोगों को लिस्ट में ऐड करना है. मैं क्या मतलब करता हूँ 5 नए लोग, यानी हमको 5 नए लोग को सीधा बोलना नहीं आईएक्स कर रहा हूं मैं, जुड़ जाओ. लेकिन 5 नए लोगों से रोज बात करना है, हमको नॉर्मल बातें करनी है. हम क्या है, हम प्रॉब्लम सॉल्वर्स है, हम कंसल्टेंट है. अगर हमको लोगों से बात करके उनकी प्रॉब्लम ही नहीं पता है, तो हम क्या सोल्यूशन ऑफर करेंगे? जैसे सामने वाला प्रॉब्लम शेयर करता है, उससे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप उस प्रॉब्लम को रखना चाहते हो या सॉल्व करना चाहते हो? ज्यादातर लोग सॉल्व करने की ही बात करते हैं, तो हम इनविटेशन मेक करते हैं. इनविटेशन कैसे मेक करना, उसकी लेंदी सी पूरी डिटेल ट्रेनिंग हमारा आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन में बनाया हुआ है. उसके ऊपर बिल्कुल हम डिटेल में बात अभी नहीं करेंगे. तो इनविटेशन करना है हमको. इनविटेशन एज हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन पे आपको करना है. 6 लेवल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, उसमें मैं प्रिफर करता हूं कि थर्ड लेवल पे करूं, यानी कि फोन पे करूं. 2 मिनट से ज्यादा नहीं करता. अगर आप सोच रहे हो वो आपको इनविटेशन सब आता है, FORM, फैमिली ऑर्गेनाइजेशन रिक्रिएशन मनी, तो बेसिकली वो नहीं है. 1960s का है, फेलियर कंसेप्ट है, वो बकवास है. अगर वर्क होता तो आज तक इंडिया में सारे डायमंड होते. ऐसा नहीं है, थोड़ा मॉडर्न टेक्निक है. जा करके डिटेल में स्टडी कीजिएगा. नेटवर्किंग में एक्सपीरियंस आपको हो तो भी कोई बात नहीं, देखना, देखने से कोई हानि नहीं होगा. तो 3 से 5 नए लोगों को आपको डेली बेसिस पे इनविटेशन करना है. उस पे आप यदि फोन कॉल करें या फिर एटलीस्ट एक वॉइस नोट भेजे, जिसपे आप उनका जो हमारे 4-5 स्टेप्स है उसमें टाइम कमिटमेंट मांगने वाला चीज आप वॉइस नोट पे मांग सकते हो. सो बेसिकली ये हमारा 4th स्टेप है. ये भी हमको डेली बेसिस पे करना है. एटलीस्ट 3 से 5 नए लोगों को डेली बेसिस पे हमको ये ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करना है. अगर आप
सच में अपने लाइफ पे इम्पैक्ट पाना चाहते हो तो. So we were talking about the fourth step, sharing the transformation. What is IX all about? IX is all about transforming yourself and transforming the world. So if you mutually align with the purpose of IX, innovate, impact, inspire, you need to create impact on other people's life as well as your life. For that, you need to share this wonderful opportunity with the world. When I talk about sharing this opportunity, we as a professional, if you really consider this as a profession, as a business seriously, you need to build this professionally. We basically classify it in two types, like list and inviting. Normally, why is a list required? You need to know whom you're going to share this transformation with. Who's your target market? Your hot list, warm list, cold list, national list, international list, whatever. But you at least need to know, and it should be on paper. If you hate physical paper, I don't mind, do it on a sticky note, but it should be there. Reason being, this is a profession. You better treat it as a profession. Your paycheck will also, it will pay you also like a profession. So list should be as comprehensive as possible. And I am of course not going to dive deep in the list building and the basics of networking. For that, we have made the entire IX Academy, and the entire training is in there. You can consult your VIP 500 or 1000, whomsoever you're associated with, and get the respective training and insights on it. So basically, in list, the most important part, as I was previously mentioning, it should be as comprehensive as possible, and you should be adding at least 5 new names daily. What I mean by 5 new names daily, you should not just like spam people, hey, check this app out, hey, like join IX. This is not the way we are building the business. We actually need to start planting relations, starting to talk to people. What are we in network marketing industry? What are we in IX? We are problem solvers. We help people to live a better life. To solve the problem, you need to know the problem of the person. So when you talk, when you listen, you get to know the problem. Then you just ask a simple question, whether you're willing to keep the problem forever or you want to sort it out. Most of the people will tell you that they want to sort out the problem, and then comes in the invite. So invite, again, I'm not going to go in detail, but I just want to tell you there are 6 levels of communication. So again, not in depth for that, but I prefer going on the third or the as high as possible, like making the phone call for inviting those people whom I'm connecting with on a daily basis. So list needs to be expanded, and I need to invite like 3 to 5 people every single day to share this transformation or share this opportunity which is going to solve the uh, problems once and for all in their life. So basically, in invitation, it has to be consistent, and again, there is the entire process in the IX Academy created by your respective leaders. We have the content and the academy made for that. You can check how to invite, what to invite, and every single detailing about that. But this should be again consistent, and just like any other traditional business. Just imagine if you have like put a restaurant or a food outlet, would you not invite as much as customers as possible? Of course you would. So just like that, it is a similar business, but that business is going to pay you 2 years later. That also you will just break odd even. This is going to pay you from week one or month one through all our pillars. So you got to take it seriously and build it just like a real business, and take this step seriously. So we can go to the fifth step. फिफ्थ स्टेप क्या है दोस्तों? जब हम इनविटेशन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करने के बाद उनको हमारे पास क्या है वो तो लुक करने के लिए हम बुलाएंगे ना. तो उसके लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉल होता है एवरी सिंगल डे. 9-10 बजे हम अपॉर्चुनिटी कॉल करते हैं, जिसपे 3 से 5 लोग डेली बेसिस पे बुलाना है. अगर ये आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल होगे ही. क्यों होगे सक्सेसफुल दोस्तों? यहाँ पे एक बंदा था मेरे टीम में, है भी इनफैक्ट अभी भी. वो कहता है कि सर, मैंने 10 दिन से 3 लोगों को बुलाया, कॉल पे कोई भी जुड़ा नहीं. 10 दिन से उसने सेम 3 बंदों को बुलाया कॉल पे. तो ऑफ कोर्स लाइक ऐसा नहीं होता. हर कोई जुड़ता भी नहीं है, हर किसी का डिसीजन होता है. तो मैं स्पेसिफिक रहना चाहूंगा. 10 दिन जब आप इनवाइट करोगे, 3 से 5 नए लोगों को रोज लेकर के आना है. हर किसी के लिस्ट में
30 से 50 लोग तो है ही, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ इस धरती पे जो 18 साल से ऊपर और 50 लोगों को नहीं जानता। अगर आप ऐसे हो तो कहीं ना कहीं हम मतलब झूठ बोल रहे हैं या फिर अबनॉर्मल है, और अबनॉर्मल इस कॉल पे कोई नहीं है, मेरा गारंटी है। तो 3 से 5 नए लोगों को मिनिमम हमको बुलाना है। अब आप कहोगे कि मेरे लोग तो जूम पे नहीं आते, मेरे लोग तो यहाँ नहीं आते। हाँ, हम तो चंद्रमा से लोगों को लेकर के आ रहे हैं, हम भी अर्थ पे ही काम कर रहे हैं, 2 हाथ 2 पैर जिसको मनुष्य कहते हैं उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। अगर हमारे लोग आ रहे तो आपके भी आएंगे। बस हमको सर ये देखना है किस तरह से वो स्किल सेट को मैच करना है, या क्या ट्रेंड वर्ड्स को हमको मैच करके लेके आना है, या क्या नंबर, हर एक का अपना नंबर होता है। 3 लोग को बुलाओगे तो किसी के 3 में से 3 आएंगे, किसी के 3 में से 3 नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप 10 को बुला रहे हो और एक बंदा आ रहा है तो 30 को बुलाओ, 3 आएंगे। आपको आपका नंबर पता होना चाहिए, जो भी आपका रिस्पेक्टिव नंबर है उस हिसाब से 3 से 5 नए लोग को आपको बुलाना ही है। इसीलिए हम कहते हैं लिस्ट को एक्सपांड करना है, जो कि हर एक बिजनेस में होता है। इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, डरने वाली बात नहीं है, नॉर्मल बिजनेस की तरह ही है। लेकिन इसको आपको ओवर द पीरियड ऑफ 10 days करना है। So what I was talking about, the 5 steps, fifth step is like attending a Zoom opportunity call. So basically, why do we make a list and why do we invite is for them to take a look at what we are having at IX. So invite at least 3 to 5 people minimum every single day on the call. What I mean by invite is 3 to 5 people should be there on the Zoom call, opportunity call every day. We have opportunity calls at 9, 10 every single day, so that our people have the opportunity to invite and get their people in. Now, if you're like telling me that, oh, my people don't come on Zoom, so let me tell you, we are also working on the planet Earth with human race only. So if we can, everybody can. It's like just we need to get on a mutual page and bridge the gap what is required for us to bring those people or pique that interest in. So I agree 100% that of course if you're inviting 3 people, 3 on 3 won't come on the call. So you need to know your number. If 10 people you're inviting and one is coming on the call, you should invite 30 people. As simple as that. It is just the numbers game, and it is just like a traditional business. This is what we have to do in the traditional business as well. Just the difference is we are not taking you high investment, and the competitors don't give you the advice. Here we are giving you the advice, supporting you in every single step. So 10 to 15 days we have to do this. So like 30 to 50 people, if you count 3 people for 10 days, you're inviting 30 people. If you count 5 people every day, you are inviting 5 people every day. So basically, if you're saying that I don't have 50 people in my list and you're above 18, so somewhere we are deep down inside, ask yourself, stop lying. And I think like everybody on this call is a normal human being, and a normal human being of age 18 has more than 50 people in their contact list. So we don't need to prejudge, and we need to start sorting the list, talking to them, inviting, and getting them to see the opportunity every single day for 10 days. So we can go on the sixth step. So ये जब आप करते हो फिफ्थ स्टेप, तो सिक्स स्टेप हमारा टीम बिल्डिंग है। टीम बिल्डिंग में 2 थिंग्स आते हैं, जो क्लोजिंग है और फॉलो अप है। दोस्तों, क्लोजिंग कभी भी इवेंट नहीं होता, प्रोसेस होता है। क्योंकि क्लोजिंग में कैसा होता है कि आप एक व्यक्ति को उसके लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करने का सल्यूशन बता रहे हो, उसके कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, उसको रिजॉल्व करके उसको एजुकेट करना पड़ता है, तो अब क्लोजिंग होती है। मैं तो कहता हूं ये आप मानसिकता रख के चलिए कि पहले 10 दिन में 30 बंदे एक भी ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन 11वें दिन में उन 30 में से आप जो है 3-4 लोग ज्वाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको एजुकेशन मिल गया कि इसमें किस तरह से उनकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन आपको क्या 11 दिन पे बाद उनसे बात करना है? बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं। जैसे आपने मान के चलो आज के दिन पे 3 लोगों को अपॉर्चुनिटी कॉल पे बुलाया, आपका काम है कल उन 3 लोगों का टाइम शेड्यूल करके आपके अपलाइन के साथ एक 3 वे कॉल करना। अपलाइन यानी जिसके साथ आप जुड़े हो वो नहीं, एटलीस्ट वो वीआईपी 500 या 1000 एटलीस्ट होना चाहिए, तब जाके उसको एक एजुकेशन का एक्सपोजर मिलता है। ये करना क्यों जरूरी है? ये करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके आंसर आप नहीं दे पाओगे, और अगर आप स्टम्प्ड हो जाते हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति ये सोचता है कि अरे मैं भी स्टम्प्ड हो गया तो मैं बिजनेस तो कर ही नहीं पाऊंगा, ये तो स्मार्ट है, मैं तो बुद्धू हूं। लेकिन अगर डे वन से थर्ड पार्टी रखते हो, आप प्रोसेस दिखाते हो, कहीं ना कहीं उसको बिलीफ आता है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम एक तो वो 1 एक्सपोजर में भी क्लोज हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, जीरो नहीं है, लेकिन 20% है।
लेकिन 80% प्रोबेबिलिटी ये है कि वन टाइम में वो क्लोज नहीं होता, फॉलोअप करना पड़ता है। फॉलोअप यानी क्या, उसके पीछे नहीं पड़ना कि नहीं आज ज्वाइन करेगा कल ज्वाइन करेगा, नहीं, उसको रिलैक्स करना है। पहले बात तो काम डाउन करना है, उसको बोलना है कि डिसीजन ज्वाइन करना नहीं करना आपका है, लेकिन उसको 3 से 7 एक्सपोजर एवरेज में लगेंगे अपने आप को एजुकेट करने के लिए कि ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए है या नहीं है, या फिर उसके लाइफ का प्रॉब्लम इस माध्यम से कैसे सॉल्व होगा। तो फॉलोअप हमको करना है। फॉलोअप क्या हो सकता है, 3 वे कॉल के बाद हो सकता है कि आप एक सीजर स्टोरी कॉल पे लेकर के आ रहे हो, जो हमारा सैटरडे का कॉल होता है, या कोई भी कॉल पे लेके आ सकते हो, या फिर ये ग्लोबल कॉल हो सकता है, दिखाने सिस्टम कैसा एम्पावर करता है, या फिर उसको प्रोडक्ट रिजल्ट्स बता सकते हो, या फिर उसको कोई एक और एक अपलाइन के साथ कॉल करा सकते हो। जितने एक्सपोजर्स आप उसको दोगे कम से कम समय में, रिजेक्शन फ्री में या प्रेशर फ्री वे में, उतना वो जो है हाँ या ना बोलेगा। कोई भी हाँ भी एक डिसीजन है, ना भी एक डिसीजन है, हमको रिस्पेक्ट करना है, रिलेशन रखना है, और जो है उनको एजुकेट करना है। हमारा एम्फेसिस एजुकेशन पे, ये डेली बेसिस पे हमको करना है। किन लोगों के साथ करना है, जिन लोगों के साथ कल हमने प्लान दिखाया, और जिनको पहले भी प्लान दिखा और क्लोज नहीं हो, उनके साथ फॉलो अप करके ब्रॉडकास्ट बना के उनको एजुकेट करते रहना है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द 6 स्टेप नाउ. 6 step is team building. Of course, you can see as displayed on the screen, there are 2 steps: closing and follow up. So basically, closing is not a event; it's a process. Because when someone joins the business, they need to know whether this opportunity can really fix their life's problem. They must be having some limiting beliefs or whatever which is like hindering them from starting this opportunity. For that, the first thing that you're going to do is a 3-way call. Why is a 3-way call necessary? For example, there are some many smart people. I mean, I was also one of them who used to like do everything by myself when I started new in this industry or new in some opportunity, whatever. So when you start answering all the questions by yourself, and let's say one question comes wherein you're getting stumped, so the guy thinks that, oh, this can happen with me also in the business. So this business is not for me. I don't know anything about this market, about this platform. So maybe this won't work for me because this guy is smart and he can get stumped, so can I. So basically, that's where the 3-way call comes in, wherein like you introduce your sponsor as in like not one who sponsored you in the business, who is VIP 500 or 1000, maybe in your respective line of sponsorship, you can take him on a 3-way call. And third party approach always works. Third party approach is the most powerful tool in the network marketing industry. So when, let's say, if you are having 3 people or 5 people attending the Zoom call today, your job is to fix appointments with them for tomorrow for a 3-way call with your upline who's VIP 500 or VIP 1000. That's the way how you book your entire day. Your calendar is going to make you the king, so you have to book your time and schedule your activities accordingly. So probability is more that in the first 10 days, the 30 to 50 people you're showing the presentation or sharing the transformation won't join. Not even a single person might join. So this is not a negative part. As I told you, we are professional educators, and people on an average, 80% of the people need 3 to 7 exposures for them to start with anything else or new in their life. So our job is to make them relaxed, release the pressure of them, and tell them, look, it's okay to not join, but I just want you to like see an opportunity wherein you can solve this problem of your life. Do you mind if I educate you on that? So schedule a 3-way call. Your job is like fam bam, from a meeting to a meeting, just like after a 3-way call, you can put him on a scissor call, maybe when your group or your uplines are doing scissor stories or whatever, wherein he can see people from different backgrounds sharing testimonials, maybe another opportunity call, or maybe a global call like this, wherein he can see how big the support system is, how professionally they are training you on the system, and how people are growing with a growth rate more than Facebook. So these all things definitely educates the prospects and moves him towards closing. And your job as a professional is to condense all these 3 to 7 exposures in a week's time, and accept this fact practically that it is going to take time, just like traditional business, but it won't take you 2 years, it will take you 10 days for you to follow up. But your job is to schedule whatever people who are coming on the call today,
three-way call with your upline tomorrow, and the rest of the people you have to add them in the broadcast and just keep on giving exposures, out of which the third step was also an exposure wherein you are sharing the product results or whatever, some company facts, whatever. So this is the sixth step which we need to do on a daily basis, and fortune is in following up or in team building. Of course, you don't get for paid for doing activity, you get paid for doing productivity. So the number of volume you're going to put in the company, that much we are going to pay you from the pillar number 5. So 7 स्टेप पे आते दोस्तों. 7 स्टेप टू सक्सेस हमारा क्या है? जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है मुझे लगता है हमारे बिजनेस में, इस स्टेप पे वी कैन गो गेटिंग स्टार्टेड. दोस्तों, लोगों को लगता है हमने ज्वाइनिंग कर दी, हमारा वर्क ओवर हो गया, हमारा काम खत्म नहीं हुआ. हमारा काम जो है वो शुरू हुआ है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति हमारे टीम में ज्वाइन होता है. तो ऐसे बिल्कुल वहम में मत रहिए कि मैंने ज्वाइन कर लिया, मेरा काम हो गया, हाँ मेरा काम खत्म हो गया. अभी तो आपका काम शुरू हुआ है, बिजनेस शुरू हुआ है, आपने एक नई ब्रांच डाली है, आपने एक नया फ्रेंचाइजी खोला है. अब आपको वो सारी चीजें उसको सिखानी है जो आपको आती है. तो कहीं ना कहीं उसको फर्स्ट 48 आवर्स में आपको उसके सारे सेटअप कराने सर्विसेज के. सारे सेटअप कैसे करवाओगे? सर्विसेज के सेटअप करने के लिए दोस्तों हमारे पास अलग अलग जो है एक्सपोजर्स होते हैं, अलग अलग टूल्स बने हुए हैं. हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में डोंट बी अ फुल यूजर टूल को प्रमोट करना सीखो, उनको सेटअप कराओ सर्विसेज पे, सर्विसेज को यूज करना सिखाओ, उनको वेलकम कॉल के पे प्लग करो. हमारे वीक में 2 वेलकम कॉल होते हैं, तो उस वेलकम कॉल पे उनको बताओ कि इंडक्शन का क्या मतलब है, गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग का क्या मतलब है, इनविटेशन का ट्रेनिंग कहाँ मिलेगा, बैक ऑफिस कैसे यूज करना है. ये सारी चीजें एक नए व्यक्ति को पता होनी चाहिए. अगर आप नहीं बता रहे हो तो आप आपके बिजनेस को या आपके फियर्स को लेके, वही वाई वाली बात है, आपको पता ही नहीं आप कहाँ जा रहे हो. एयरपोर्ट पे आ गए लेकिन पता नहीं कौन सी फ्लाइट लेने, कौन सा डेस्टिनेशन है. दूसरा स्टेप, हमको हमारे लोगों को स्मॉल स्मॉल विक्ट्रीज लेकर के जाना है. दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई डे 1 पे 1 लाख 10 लाख रुपया नहीं बनाता. छोटी छोटी विक्ट्रीज होती है जो हम एजुकेट करते हैं. लोगों को एजुकेट करने पे हमारे लोग ओवर द लाइन लेके जाते हैं. जैसे स्कूल में भी हम पहले पहली कक्षा में थे, फिर दूसरी में गए, ऐसे करते करते 10वीं 12वीं कॉलेज, फिर जॉब लगा, फिर एक्सपीरियंस है, आज जहाँ है वहां है. ऐसे डे 1 पे पैदा होते ही हम जीत नहीं गए थे लाइफ में. तो उसी तरह हमारा 5 PM का रोज मीटिंग होता है जिसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड या नेटवर्किंग रिलेटेड ट्रेनिंग होता है. उस पे प्रमोट कीजिए, लोगों को लाइए, ताकि आपका टीम एजुकेटेड होगा और छोटे छोटे जो उनको क्वेश्चंस है उसके थ्रू वो आगे बढ़ते जाएंगे. और बिजनेस में स्मॉल स्मॉल विक्ट्रीज उनको धीरे धीरे बड़ा करता है. बिल्डिंग कभी एक दिन में नहीं बनता, पहले एक ईंट लगता है, मोटर लगता है, एक फ्लोर बनता है, ऐसे करके बिल्डिंग बनता है. उसी तरह आपका ये स्टेप सबसे बड़ा आपका बिजनेस को लेके जाओगा अगर आपने इसको सीरियसली लिया तो. सो अबाउट द 7th स्टेप विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द बिजनेस, डियर ऑल. सो some people have a perception which is like a myth. They think like if they sponsor someone, if they join someone in the business, their job is over. They feel like, yeah, I just joined the person, now my work is over, now I'm going to have a residual paycheck of so and so called dollars. So that's absolutely false. Our actually work starts when someone joins our business. Now it is our job to educate him with all the possible things that are in the business. It is like you are setting up your own private franchisee in an another location, in your location nearby or another town, wherever the distributor is located. Now you need to train every single thing to him, like setting up the services or setting a welcome call with him. There are everything is available. We have like 2 welcome calls in a week wherein you can just take the distributor through what is the importance of the getting started training, how to invite, what is the product. And there are different tools also made in the IX app as well as on the YouTube wherein you can promote them if you are not feeling confident enough about how to set your people up on the services. So you should, like, there is a old saying, don't be a fool, use a tool. Just use those tools and get them started, get them to know how to use the product, how to use the service, how to use the back office, how to check their VIP analysis and whatsoever, so that they know what they're doing actually in the business. Next step is like
getting them to small victories. Any big empire wasn't like built in a single day. You first build a single brick, then you take it to a single story, double story, and then eventually it becomes big. So we have like 5 p.m. meeting every single day. I don't know how it is done in like other where you can consult your upline for sure for this, wherein we educate you 4 days on the product, 2 days on the technical stuff, 2 days is the basic stuff with the alerts, 2 days we have networking training. So all their limiting beliefs are satisfied and they get ahead from where they had started. Nobody starts with a $10,000 monthly check, but what they do is they start and they start moving ahead. First they go to the primary school. Even in the school you went to a primary school, then secondary school, then to the college, so completed your professional thing, your job, and then now we are here in IX. So similarly this is also a process, and wherein it is your responsibility to do this seventh step, wherein you inspire your team member to have small victories so that he's a better person and an educated team is an effective team. So last step दोस्तों, eighth step of the training, mentor session. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट. नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप सिर्फ रिक्रूटर हो तो कभी भी बहुत बड़ा पैसा नहीं बना सकते हो, आपको डुप्लीकेशन करना पड़ेगा. नेटवर्क मार्केटिंग एक जॉब की तरह, अनलेस एंड अनटिल डुप्लीकेशन नहीं आता है. डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? डुप्लीकेशन का मतलब सिंपल होता है, यही जो 7 स्टेप में आपने जो सीखा ना, वो सीखो और सिखाओ, सीखो और सिखाओ, और फिर सिखाने के लिए सिखाओ. समझाता हूं मैं. पहले बात तो मान के चलो आप आए, सीखे प्रोडक्ट को कैसे सेटअप करना, आप VIP 100 चले गए, प्रोडक्ट को सेटअप करना सीख गए. उसके बाद आपको जो चौथा डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है ना, उसका प्रोडक्ट सेटअप खुद करना है, क्योंकि ये बिजनेस आपका है, आपको सिखाना पड़ेगा. नहीं, अगर आप आपके अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट हो, कहीं ना कहीं आपकी डाउनलाइन भी आप ही के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे. सोचने की हिम्मत करो, 100,000 की टीम तो बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि 30 लोग ही आप नहीं हैंडल कर रहे, तो वो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, टीम बड़ा कैसा होगा. तो कहीं ना कहीं आपको सीखना है, सिखाना है, और वही लोगों को सिखाने के लिए सिखाना है. आपका अपलाइन इस बिजनेस में आपको मेंटोर करने के लिए, उसका गोल है आपको इंडिपेंडेंट करना. दैट इज अ ब्लडी गुड गोल, और वही गोल लेकर के हम आपको स्टार्ट कराते बिजनेस में, वही आप रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका टीम बढ़ेगा और आपको कोई किसी भी ऊंचाई तक छूने से रोक नहीं सकता. अगर आप सोच रहे हो सिर्फ बंदे ला करके मैं सिस्टम में डाल दूंगा और मैं बड़ा हो जाऊंगा, ऐसा कभी भी कोई करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बिना डुप्लीकेशन के बना ही नहीं. फैक्ट है, रिसर्च के साथ बता रहा हूँ. So eighth step, which is the most important, again, one of the most important step, learn, teach, and duplicate. Network marketing is just like a job if you don't have a duplication in it. So basically, what we covered in the seventh step is like we learned everything about the services. For example, you got started in the business, you are VIP 100. Now you know how to like set up the services. You need to learn that, and you need to start teaching that to your distributor number 4. Unless and until you take the accountability of the business, I mean, you can't build really big. Recruiters, people who can just recruit, they can just make as much as like $1,000 to $2,000 at the most. But who makes the biggest money in the business? Who are builder, who can duplicate actually. And like you need to learn, teach, and teach people how to teach. That is what you need to do with the eighth step. And whatever respective rank you are in, you need to take the accountability, because your upline is in the business to help you in the business. So we are not ought to abuse the word help. He will not do the business for you, but he will teach you how to do the things independently, whatever he has learned from his mentor. So you need to learn, you need to teach, and you need to teach how to teach. So eventually, that is the 8 discipline which you need to inculcate in the training. So I need to summarize this maybe in 15 seconds, how you're going to plan your day, which was the first step. So basically, early in the morning, before you start your day, you start winning with your mindset. Have the mindset of like smashing the entire day with all the productive activities. Then, like maybe you are sharing some product results on the X app, Facebook stories, whatever, which was the third step, product results with the 100% of the product use. And then you share the transformation, you build the list, invite people to the business. This we normally do after maybe 7:30 to 9, because 9:10 is our product 9:10 is our opportunity call. And then let's say
Next job for me is to these three people schedule a three-way call, which we normally do at like around 6:30 to 7:30, 1 hour. That's when we occupy our uplines who are VIP 500 and above to schedule a three-way call or to schedule a follow-up exposure. 5 p.m. we normally like set people up with the getting started stuff and getting them the small victories, and then 9:10 is our presentation call, and maybe in the night we normally mentor people how to teach and how to duplicate. So that's how you can occupy your entire day and plan a day ahead your activities. And I remember like 19 months ago when I first met Joe Martinez, I used to ask him what is the secret, as if like he came in with the Aladdin's thing. Like you, I don't know whether it is there in the foreign countries, whether he has some secret which is make me a sudden millionaire. So he used to tell me, he used to answer me the same thing: Viraj, do the basics as much as possible. So these are the 8 basics which, as much as possible, no one is a professional from day one, but if you practice these basics aggressively, massively, so there is no leaps and bounds for success. And now we move towards the last slide, which is again for 5 minutes. um, सो लास्ट स्लाइड पे आते हैं दोस्तों. लास्ट स्लाइड क्या है, जो हमारे माइलस्टोन्स, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था $500 से $15,000 कैसे हम इस बिजनेस में बनाएंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा. तो फर्स्ट माइलस्टोन क्या है, टू लिव द आईएक्स लाइफ. आप कोर जाओ. कोर क्या है, कोर वो व्यक्ति होता है जो 8 स्टेप्स टू सक्सेस डेली बेसिस पे करता है. अगर 1 मंथ आप 8 स्टेप्स टू सक्सेस करते हो तो आप कोर बन जाते हो. इवेंचुअली कम से कम 50 लोगों या 30 लोगों में से 12 लोग साइन अप हो जाते हैं. आप VIP 500 है, VIP 1000 डेफिनेटली जाते हो, डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम स्लॉट आप दे रहे हो इस बेसिक के लिए. कोई पार्ट टाइम में कर रहा होगा, कोई फुल टाइम में कर रहा होगा, डिपेंड करता है. लेकिन फुल टाइमर्स ये 1 वीक में कर सकते हैं ये स्टेप, और पार्ट टाइमर्स 1 मंथ में आप $500 to $1,000 बड़े आराम से बना सकते हो अगर आप सीरियसली डे वन से इसको फॉलो करो. सेकंड स्टेप दोस्तों, सेकंड स्टेप हमारा गो गेटर है. गो गेटर क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो 7th और 8th स्टेप पे इतना फोकस करता है कि उसके टीम में 6 कोर बनते. 6 कोर ये नहीं, क्या कोर, वो व्यक्ति होता है जो वही 8 स्टेप्स डेली बेसिस पे अपने दिन को प्लान कर रहा है. तो जो व्यक्ति के पास 6 ऐसे लोग हैं, जो लोग, आप सोचो 3 से 5 व्यक्ति को लेकर के आ रहे, 3 व्यक्ति भी पकड़ो ना आप, 3 व्यक्ति भी 10 दिन लेकर के आए तो एक बंदा 100 लोगों को लेकर के आ रहा है. तो 6 बंदे कितने लोगों को लेकर आ रहे हैं दोस्तों, 3 लोग. अगर एक व्यक्ति 3 लोगों को लेकर के आ रहा है 10 दिन, तो 30 लोग हो गए. तो 6 व्यक्ति जो है 120 लोगों को लेकर के आया, तो 120 आपकी 3 वे कॉल हो गई. 120 3 वे कॉल होने पे फॉलो अप रेशियो वगैरह देख के कम से कम 40 ज्वाइनिंग होती है आपके टीम में. आप गो गेटर होते हो, $1,000 का इनकम आता है, या 1,000 से $4,000 का इनकम आता है. अगर 3 के जगह बंदे ने 5 10 15 इन्विटेशन किए, तो हम पासिंग मार्क पे जीना चाहते हैं तो जी सकते, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. लास्ट स्टेप हमारा इन्फ्लुएंसर क्लब. इन्फ्लुएंसर क्लब क्या है, जिसके टीम में 6 गो गेटर होते हैं. 6 गो गेटर क्या होते हैं, जो 8 के 8 बेसिक करके अपने लोगों से वो लास्ट के 2 स्टेप भी करते हैं, जिनके टीम में 6 गो गेटर होते हैं. इनका चेक दोस्तों कम से कम $4,000 से $15,000 महीने का होता है, यानी कि 3.5 लाख से लेकर के 11 लाख रुपया पर मंथ. तो दोस्तों बहुत ही बड़ी इनकम है, इसमें कोई दो राय नहीं है. तो आपको क्या करना है, आईएक्स लाइफ लिव करने के लिए फर्स्ट स्टेप, गो कोर. कोर जाना है हमको, ताकि 8 स्टेप टू सक्सेस हमारे आईएक्स लाइफ के सेक्शन में हम डेली बेसिस पे ट्रैक डाउन कर सके. सो बेसिकली दिस आर द 3 milestones which you need to practice on a daily basis to live the IX life. First one is core, as you can read. Core is one who does the 8 steps to success daily. So basically, the guy who's like doing contacting 30 to 50 people in like 10 days span can easily go like VIP 500 or 1,000 in the business. So in like first month he will have $500 to $1,000 a monthly residual income. What is a go-getter? Go-getter is someone who focuses on the 7th and 8th steps so aggressively that he will have 6 people who are doing the 8th step to success, who are called as core. So now when 6 people invite 3 people daily, for example, if a
person is inviting, how much invitation does a core make? 3% daily on the Zoom call over 10 days at least. So 30 people. So 30 into 6 is 120. If you have 6 cores, you will have 120 invitations in your team. So you have 123 way calls, and out of 120 people, easily you have 40 signups, which will get you to VIP 1000, residual income to VIP 4000, depending upon if you are going with the passing mark to invite. You want to just invite 3 because I said 3, you can invite 30 as well as 50 as well as 10 as well as 5, whatever. And you can stretch the 10-day mark to 15-day mark, depends on how painful your urge to make money is, or how much is your fear motivation, depending on the circumstances in your life. And last but not the least is the third milestone, to go influencer club, wherein you have to create 6 go-getters in your team, wherein your income is 4,000 US dollars, 4,000 US dollars to 15,000 US dollars. सो दोस्तों कोई लिख रहा है 60 × 3 180 होता है। दोस्तों मैं 10 दिन की कैलकुलेशन की बात कर रहा था 3 लोगों के हिसाब से। कोई बात नहीं, आप 180 लोगों को बुला लो, बहुत ही बढ़िया रहेगा। सो basically it depends on you how much time commitment you're gonna give. If you are giving like 6 to 7 hours aggressively in a day, you can achieve the VIP 500 or the core mark in 1 week. I did like the third thing in 3.5 weeks. I hit like VIP 800 or the maybe 10.5 to $11,000 income in 3.5 weeks. So, but I work for like, I work in Indian time, I work in US time as well. I'm awake all the time. I work for 18 hours a day. But if you are working even for 2 to 3 hours, it is not impossible. It is not some eight wonder of the world. You can make it work for yourself, provided you treat it as a business and just accept this simple 8 disciplines which will help you to live the IX life. So that is all about it. That is what I wanted to share. And thank you so much for bearing with me for this long training. And again, I tell you, things which are not interesting, they give you money, and things which are interesting, they take away the money for you. I hope you all liked the training and you made some serious note. But believe me, this is not going to do any good to you unless and until you apply it. So thank you so much. We can track this in IX live section and apply this and take our life to new levels and start transforming our life. I'll pass it back to Joe. Thank you so much. Thank you, Viraj. Thank you so much, everybody, for being on the call. We're gonna go ahead and end the call. Thank you, Viraj, for that amazing training. Remember, get in the app, start tracking your action steps. The IX Life is there for you to use, for you to duplicate, and for you to start teaching other people how to do it. So if you're in that stage where you're at a core or a go getter, and you want to go influencer, you want to get to influencer, make 5,000, 10,000, like these guys are doing out in India, well, start the duplication process. Start teaching your team how to duplicate, how to use, how to learn, and how to go out and maximize the IX life. Thank you guys so much. Have a wonderful day, and we'll see you guys next week.